balancing the perspective and requirements of a client with the design techniques to bring out the character of the house. This modern property was executed after technical planning and designing. This is Afroz Khan and I was interested with the design of this house. The plot size of our client house is 1 canal and their basic residential needs were a master bedroom along with his and her closet and a master bath on ground floor. They wanted no drawing room but a dining area with a formal sitting area जिसमें वो अपने formal guest को properly बिठा सकें, and a spacious lounge, a study room and a kitchen complex on ground floor. As they have 2 daughters, they wanted 2 bedrooms for them, a guest bedroom and an informal sitting area on first floor. Moreover, the basic challenge was कि covered area should be less than 5,000. इसके लिए हम लोगों ने मम्टी को बिल्कुल एक्वायर नहीं किया था और सर्वेंट क्वार्टर जो है वो हमने फर्स्ट फ्लोर पे अकोमोडेट कर दिया था ताकि covered area को हम लिमिटाइज कर सकें. The most important requirement of the client was that upon entering there should be a feeling of spaciousness and depth, and wherever you look you'll feel expanse vertically and horizontally. So I incorporated that feature by proposing a double height lobby on the ground floor with a big glass window which allows sunlight to stream into the house throughout the day. बेसिकली इस डबल हाइट लॉबी बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि देयर शुड बी कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 फ्लोर्स एंड जब आप अगर पीछे जाएंगे तो पीछे आप देखेंगे कि हमने इस स्टडी को और फर्स्ट फ्लोर पे लाउंज को एंगुलर किया है. उस एंगुलर का करने का एक मकसद ये था कि जो पीछे मास्टर बेडरूम हमारा बना हुआ है उसकी प्राइवेसी हम मेंटेन कर सकें कि व्हेन यू एंटर इनटू द हाउस आप डायरेक्टली रूम में नहीं देख रहे. और सेकेंडली ये हमारा पॉइंट था कि हमने जब उसको सन डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको हम लोगों ने एंगल पे किया था तो हमारी मैक्सिमम लाइट इनकॉर्पोरेट हो रही है इनटू द हाउस थ्रू आउट द डे और हम मैक्सिमम व्यूज़ को कैप्चर कर सकते हैं फ्रॉम बोथ फ्लोर्स. One of the magical things about living in a house like this is that you get to see the sky change. You get to see the clouds and the rain. You get to see the way that the sun reflects and shine into the house. You see the backyard and that's what this house is about. You have this exposure to the atmosphere, to nature, embracing natural light and fresh air. इस घर को बनाने का मेजर चैलेंज हमारा ये था कि हम ग्राउंड फुटेज को कम रखें ताकि वो इकनॉमिकली चीज़ें कंपैटिबल हों. तो उस नज़रिए को हमने रखते हुए जो आपकी बाकी सारी स्पेसेस थी, इवन सारे घर की आप सारी स्पेसेस देखेंगे तो हम लोगों ने स्पेसेस को फंक्शनली और प्रैक्टिकली इस तरह से पॉसिबल किया कि वो इकनॉमिक्स कंट्रोल कर सकें. लाइट को इनकॉर्पोरेट करने का मकसद ये था कि थ्रू आउट द डे आपको लाइट चलाने की ज़रूरत ना हो. स्पेसेस जो हैं वो आपकी वेल लाइट और वेल वेंटिलेटेड हों. हमने ग्राउंड फुटेज को कम करते हुए बैक लॉन्स और फ्रंट लॉन की स्पेसेस को ज़्यादा क्रिएट किया था जिसमें आपके व्यूज़ कैप्चर होते हैं और आप घर में हर एरिया में बैठे हुए अपने सारी स्पेसेस से व्यूज़ लेते हैं. और इसमें सारी की सारी जैसे आप लाउंज में देखेंगे, लाउंज में आपकी सारी वॉक थ्रू आउट विंडोज़ हैं. आप स्लाइड करते हैं तो आप स्टेप इन कर देते हैं अपने सिटिंग डेक में एंड सिटिंग डेक will be the part of lounge. I rationalized the sizes of rooms and living areas so as to use the spaces efficiently, creating a connection between the indoors and outdoors, which gives the family more space to spread out, as well as a more intimate scope to relax and enjoy time outside.